Hello and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor Nikhil Kumar. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया से चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से जुड़ी हुई खबरें लेकर हाजिर हैं और खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ जयंत दास। जयंत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया निखिल। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा। Thank you, Nikhil. Gold prices declined from all-time highs over strong US inflation figures. US stocks end sharply lower after March inflation data. And oil prices hovering near 6-month highs amid West Asia tensions. अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों के बाद सोने की कीमतों में गिरावट। मार्च में मुद्रास्फीति के अनुमान से अधिक रहने के बाद अमेरिकी शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद और पश्चिम एशिया में तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमत 6 महीनों के उच्चतम स्तर के आसपास। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध के लिए सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। इस कीमती धातु का मूल्य 66 रुपए की सुस्ती के साथ 71,192 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं अंतिम समाचार मिलने तक मई के वायदा कारोबार में चांदी भी 242 रुपए नीचे आकर 82,373 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। वैश्विक बाजारों में दिन के कारोबार में सोना कॉमेक्स पर $2,355 और 30 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी $28 और 9 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। जयंत, आज की पहली खबर पर अगर हम नजर डालें, सोने की कीमत लगातार बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। तूफानी तेजी देखी जा रही है और सिर्फ एक सप्ताह यानी 7 कारोबारी दिन के अंदर ही सोना लगभग 4,500 रुपए महंगा हुआ और चांदी के दाम में लगभग 8,000 के आसपास का उछाल आया है। क्या स्थिति आप देख रहे हैं इसकी? देखिए, सोने का खास करके दर विश्व भर में थोड़ा सा लोगों को सरप्राइज किया, खास करके एनालिस्ट को भी सरप्राइज किया क्योंकि ये देखते हुए करीबन 17% उछाल हुआ है मार्च और अभी का जो अवधि है पिछले 4-5-6 हफ्ते के दौरान। सबसे पहले तो ये उम्मीद किया जा रहा था कि अगर ब्याज दर में विश्व भर में थोड़ा बहुत गिरावट आता है, खास करके यूएस बाजारों में, तो उसमें थोड़ा बहुत शिफ्टिंग होता है एसेट्स का, जिस वजह से सोने का शायद डिमांड हो सकता है। लेकिन अगर आप सोने का पिछले 30-40 साल 50 साल का हिस्ट्री देख के चले, दिस सॉर्ट ऑफ सडन मूव और इतना ज़्यादा उछाल काफ़ी रिकॉर्ड एक अलग ही वजह जो भी कहता हूँ मैं मानता हूँ। दूसरी दफ़ा हम लोग इस प्रोग्राम में पहले भी बताए थे कि गोल्ड एज एन इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप अपना जो इन्वेस्टमेंट बास्केट है उसमें बेशक आपको कंसिडर करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अब डायरेक्टिव्स ये आया है, सबको पता है विदेशी बाज़ारों में, खास करके ब्याज दरों के मामले में यूएस बाज़ारों में, कि जून का पहले शायद कोई कटौती ना आए। और ऐसे सिलसिले में मैं मानता हूँ कि ये जो उछाल सोने में आया हुआ है इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन या डीप करेक्शन भी हो सकता है। लेकिन ये ज़रूर है, ओवरऑल अगर सोने का अगर हम 1 साल या 1.5 साल का अवधि लेके एक एनालिसिस करें कि भाई ये निवेश का रूप से 1-1.5 साल का अवधि कैसे रहेगा, बोथ सोना एज वेल एज चांदी हैव अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे मैं मानता हूँ कि करीबन 16 से लेकर 22% तक आपको 1-1.5 साल के दौरान का अवधि अगर आप लेके चले, अभी भी आप इसमें बेशक कमा सकते हैं। You're talking about a good investment opportunity in gold right now. So what would be your suggestion? Because should people be going in for ETFs or should they be buying gold bonds? What should be your... Sure. See, Anubha, ETFs is those who are looking purely in terms of investment, because once you try to buy in jewelry, there is a range of 8 to 22-24% cost which comes in because of the making charges and things like that. So purely investment, of course, you can buy gold coins. If you don't want to keep gold coins in your home, ETF is one of the safest options which are directly linked to the gold prices. That's there. But as I said, keep it in a basket of goods and products, which I'm sure would include your stocks, would include your mutual funds, would include your choice of metals too. And obviously gold ETFs is one of the safest, and in that sense, you don't have to hoard it anywhere. You don't have to keep it away in a secure place, and you get all the returns of what a normal gold is. But yes, people also buy gold based on their requirements, say over the next couple of years. If there's a marriage coming in, if there's some festival reason or whatever reason, if it is linked to that, obviously then you try to truncate the buy. I mean, right now it's at its historic peak. So even if you steam down, there is no important festival season in the next couple of months immediately that would
keep up the pressure from here on gold. So I think safely I can say at this point of time, you can wait for a little bit of the steam to go off. I don't know to what extent it will fall down, but there would be some corrections which is happening, so I can safely say that. जयंत, एक चीज़ हम ज़रूर इसमें जोड़ना चाहेंगे कि हमारे देश में शादियों का सीज़न होता है जिसमें लगातार मांग जो है वो बढ़ती जाती है। कीमतों को लोग एक तरफ साइड में ही रख देते हैं, चाहे कितना भी बढ़ जाए, अगर उन्हें ज़रूरत है तो परचेज ज़रूर करते हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर इन चीज़ों में स्थिति ऐसी नहीं होती है। तो भारत के हिसाब से अगर हम रेट्स को देखें तो क्या लगता है कि भारत में सोना और भी महंगा होगा आगे चलकर? देखिए, मतलब भारत में अलग से दर तो है नहीं, जैसे मैंने कहा विश्व भर में जो दर चल रहा है उसका साथ साथ सोने का जो रेट है वो सब बदलाव आते रहते हैं। बात आपका बिल्कुल सही है। करीबन हमारा देश में मैं अभी भी मानता हूँ शायद 70% सोना जो खरीदा जाता है खासकर रिटेल क्षेत्र में इज बेसिकली ज्वेलरी, कॉइन्स एंड बार्स और व्हाट एवर द मोड्स वो नहीं होते, और वो सारे डायरेक्टली लिंक्ड होता है, शादी हो या कोई भी और वजह हो, फेस्टिवल में घर में कुछ भी हो उसका साथ लिंक करके। तो इसमें प्राइस इंसेंटिव फैक्टर बेशक आता है, लेकिन ये भी ज़रूर है कि जहाँ पे बजट आपका सीमित होता है वहाँ पे क्वांटिटी ऑफ गोल्ड में थोड़ा बहुत कमी आ जाता है। अगर आपने सोचे कि भाई मेरे को 5 लाख का सोना खरीदना है, लोग 5 लाख जाके खरीदते हैं मौजूदा जो भी दर होते हैं। ऐसे नहीं होगा तो 5 को 7 लाख कर दिया बिकॉज रेट बढ़ गए, लेकिन एक प्राइस सेंसिटिव है, वो खरीदते ज़रूर है, लेकिन जो क्वांटिटी है उसमें थोड़ा बहुत 19-20 बेशक हो जाता है फ़र्क, या कुछ ऐसे चीज़ ले जहाँ पे मेकिंग चार्जेस में थोड़ा और सस्ता हो जाए, तो वो कोशिश करते हैं, खास करके रिटेल मार्केट में लोग कोशिश करते हैं। Moving on to the next story, all three major US stock indices ended lower yesterday after hotter than expected inflation data threw cold water on hopes that the Federal Reserve would begin cutting interest rates as early as June. The Dow Jones Industrial Average fell 1.09%, the S&P 500 lost 0.95%, and the Nasdaq Composite dropped 0.84%. US Consumer Price Index rose 0.4% on a monthly basis in March. On a year-on-year basis, the CPI increased 3.5%. Jayanto, as you were just discussing right now, the US inflation figures have come out hotter than expected. Again, third month in a row, because even the January figures were, more than expected. February figures were more than expected. So what do you see? Like earlier, people were expecting, analysts were expecting 6 rate cuts this year. Right now, what is your view? Like, how soon will the rate cuts begin, and how many rate cuts do you see this year? Well, obviously, I think there couldn't have been more apt phrase than what you just read now, the inflation data through cold water. Cold water. So, I think that sums up the answer to whatever question you asked me right now in terms of the hope for rate cuts. Yes, there has been a delay. And typically what happens is it's all a game of what you aspire the markets or the regulator to announce, and behaviorally how the market responds or reacts to that. So finally it boils down to that. To a great extent, the expectation versus the actual reality, there is a difference, and the margin of difference is what spikes up the market in enthusiasm or brings down the market. At this point of time, the market is much more anticipating for a quicker rate cut. There's not anticipating whether the rate cut will happen or not. They are all sure it's going to happen this year, but they're anticipating for a quicker of a rate cut. So what I believe is when there is news of inflation coming in and not steaming off to the extent what the market would look like, the reactions to this rate cut not happening leads to a much more deeper correction in the market. All right. So, Mr. Uday Kotak, in one of his famous reactions to the market has, I think in the last 24 hours, focused on the fair. I don't know whether carrying it in the news or not. Focused on there is an expected turbulence, which is very soon going to happen in the markets. Now, what I'm telling is, in the face of this, as the market gets anxious, as the market gets impatient for those expected rate cuts not to happen, the deeper the correction becomes. And what's important to understand is, specifically in markets where aspirations are not met, the markets respond quite brutally in terms of corrections. Similarly, when there is an over anticipation of things not happening, and in that case if markets all of a sudden come in with a rate cut, then also there's a brutal positive response in terms of trigger happy enthusiasm and people going ahead and buying stocks. In this case, what I believe is the wait has been too long. The wait has been stretched for almost 12 weeks now, and
more or less the market has now understood the fact that nothing's going to happen before June. Yeah, because So sorry, yeah. in one sentence, coming back to those 6 rate cuts, I don't think those 6 rate cuts would happen this Right. year. You used the word impatient right now, and we are talking about the fact that the rate cuts are going to happen, but not anytime soon. And do you think that's also kind of comes across because yesterday also the FMOC minutes were released, and from what I was reading, the officials said that the inflation wasn't moving lower quickly enough. Absolutely. So that's another indication, okay, the rate cuts are not going to happen anytime soon. Yeah. So then, as I said, 6 rate cuts or 3 rate cuts of equal numbers leading to the 6 rate cuts and all those stuff is matter for analysts to discuss over long meetings. But the FOMC minutes are loud and clear, and they are not happening tomorrow for sake. I mean, it's a metaphor which I'm using. But then, as I said, the markets would obviously respond to it quite brutally, I believe, in the next couple of weeks. Right. Assuming the fact that the geopolitical tension, which is now brewing up more and catapulted to a status where now Iran might attack Israel. Yeah. So and that's you think these another trigger. geopolitical situation that we have, the geopolitical tensions that are there, are also could also be a likely factor in deciding the timing of the rate cuts? No, to that extent. I don't think it will have a major impact on when Israel is attacking or when Iran is attacking. Certainly not. जयंत, हम अमेरिकी बाजार की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आरबीआई का इसमें पार्टिसिपेशन जरूर होता है. आरबीआई नजर बना करके रखता है सारी चीजों पर. अभी हालांकि रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन आरबीआई का ये कहना है कि हम वैश्विक स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और भारतीय बाजारों पर भी हम बारीकी से नजर रख रहे हैं. तो असर पड़ना तय माना जा सकता है क्या कि जो भी अमेरिकी मार्केट में या भी जो भी वहां पर बदलाव होते हैं उसका भारतीय बाजार में आएगा? आरबीआई ने जो रेपो रेट के ऊपर निर्णय नहीं लिए और स्टेटस को मेंटेन किया है, इसमें देयर इज नो सरप्राइज. आई मीन सारे मार्केट, सारे एनालिस्ट जो भी इंटरेस्ट रेट के ऊपर अलग से चर्चा करता है, रिसर्च करता है, उसके ऊपर ट्रैक करते हैं, सबका ये उम्मीद था. और उम्मीद का साथ साथ आरबीआई भी बेशक खड़े उतरे कि भाई रेट कट बेशक कोई इस वक्त शायद ना हो और उसमें एक क्लोज पॉलिसी वॉच रखा जाएगा. नाउ एज अ मॉनेटरी पॉलिसी, और जैसे आरबीआई का जो कमिटी है जो वॉच करता है मॉनेटरी पॉलिसी मूवमेंट्स एंड ऑल, ऑब्वियसली देयर जॉब इज टू कीप अ ट्रैक ऑफ नॉट ओनली व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया बट आल्सो व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली. और ग्लोबली ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए और घरेलू बाजार और घरेलू बाजारों का स्थिति का भी ध्यान रखते हुए, यहाँ पे भी मुद्रास्फीति जो है कम काफ़ी हुआ है, लेकिन उतना भी कम नहीं होगा जहाँ पे इस तरह का निर्णय लिया जाए. तो इट्स अ वेट एंड वॉच पॉलिसी. इसमें कोई मतलब अलग से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि एक तीव्र कुछ निर्णय लिया जाएगा जिस वजह से मार्केट में अलग से उछाल है. उस तरह का स्थिति नहीं है. स्थिति बहुत समझदार इस वक्त ये रहेगा बात जो आरबीआई कोशिश कर रहा है टू डू अ वेरी कंसिस्टेंट फोकस इन टर्म्स ऑफ हाउ द मार्केट एंड द इन्फ्लेशन रेट इज पैनिंग अप. दिस इज ऑल्सो इलेक्शन सीजन, सो एवरीवन वुड लाइक टू सी अ रेट कट, एवरीवन वुड लाइक टू सी स्टॉक मार्केट रियली बूमिंग एंड ऑल. सबको अच्छा लगेगा इस वक्त, लेकिन इट्स अ वेरी कॉशियस मूवमेंट which the RBI is approached, and I think it's a very good movement. And a corollary to what Nikhil just said, the differential rate is also very important because if RBI announces a rate cut and Fed doesn't, so the differential is also very important in terms of the foreign. As I said, it's the whole FDI. It's a global balance which you have to maintain. Because it's very important to understand funds flow in seconds in today's world. It just takes a small entry in a computer and you press the enter button and funds flow. So. और अब एशियाई और यूरोपीय बाजार पर नजर डालें तो एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखा गया. जापान के निक्केई सूचकांक में 0.35% की गिरावट हुई. सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम इंडेक्स में 0.31% की सुस्ती आई. हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स 0.26% नीचे आ गया. वहीं दूसरी ओर चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.23% की बढ़त हुई और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.07% के उछाल के साथ बंद हुआ. यूरोप के सभी प्रमुख शेयर बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे. जर्मनी का डेक्स 0.45% के नुकसान में था. फ्रांस के कैक में 0.04% की सुस्ती आई और अंतिम समाचार मिलने तक लंदन के फुट्सी 100 में 0.12% की गिरावट देखी गई. तो जयंत, यूरोपीय और एशियन मार्केट के बारे में आपके क्या विचार होंगे? Well, overall, obviously, soft markets, given the status of what has happened in the US. I believe a little bit of good thing is यहाँ पे ये है कि आज हमारा
सेंसेक्स या स्टॉक मार्केट था जहाँ बंद था, तो थोड़ा बहुत आई थिंक जिसको बोलते हैं ना जोड़ का झटका धीरे से शायद कर लगे, हम ये उम्मीद कर रहे हैं, बट नन ऑफ अस नो एक्चुअली क्या कल हकीकत होगा। कल शायद एक बहुत बड़ा गिरावट के साथ मार्केट शुरू हो सकता है, ऐसा कुछ हम बताने नहीं चाहते, लेकिन ये ज़रूर है कि आज मार्केट बंद होने की वजह से थोड़ा बहुत करेक्शंस अगर खास करके अमेरिकन मार्केट्स में अगर आज देखें तो कल उसका जो झटका है हमारा घरेलू बाजार में शायद थोड़ा अलग से, मतलब उतना तेजी से ना आए। जी, मूविंग ऑन, द यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB left its key interest rate benchmark unchanged today. The bank's rate setting council said in its post-decision statement that most measures of underlying inflation are easing, but domestic price pressures are strong and are keeping services price inflation high. Along the lines of, what the US Fed said, Jayant, same thing we have been seeing, because whether it is ECB or whether it is the Bank of England, US Fed, more or less the same pattern is being followed. Absolutely. I want to bring your attention to China, because we were talking about the Asian markets, and Goldman Sachs and Morgan Stanley have raised the outlook for China's economic growth this year as factory activity and exports accelerate more than expected. Now, Goldman Sachs has forecast 5% growth in 2024 vis-a-vis 4.8% earlier, and Morgan Stanley has raised it to 4.8% vis-a-vis 4.2% earlier. How do you see this for the Chinese economy and the world economy as a whole? For 50 basis point approximate average jump is a very important jump given the size of the Chinese import. Exactly. India is one of the largest. I mean, it's not a Zambian or a Ugandan economy which needs to see a 30-40% jump to make a considerable change. So coming back to China, I believe this is a good news in terms of how China, with the challenges it has been facing for the last 6 months to a year, specifically in terms of growth trying to slow down, in terms of manufacturing bases trying to slow down. Companies, some of them moving out, we all know they're moving out to a lot of Southeast Asian nations. Yes. So given all those facts together, I think this would be a shot in the arm in terms of news. Now the important part is the global impact. We all know all commodities, metals, whatever markets globally, they move in tandem with how China moves in terms of the demand and supply. So there is no doubt if there is a growth happening in the domestic markets of China, it would have a very positive multiplier effect internationally too. और अगली खबर पर बढ़ते हैं। ईद उल फितर के अवसर पर आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बंद रहे। डेरिवेटिव, इक्विटी और SLB तथा मुद्रा आधारित डेरिवेटिव के साथ साथ इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में भी आज के दिन कारोबार नहीं हुआ। सुबह के सत्र में आज कमोडिटी डेरिवेटिव खंड बंद रहे, हालांकि ये खंड शाम के सत्र में 5 बजे से 11:55 तक खुला हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार कल फिर होगा। इससे पहले घरेलू सूचकांक कल अपने नए उच्चतम स्तर पर पहुंचकर बंद हुए थे। सेंसेक्स पहली बार रिकॉर्ड 75,000 अंक से ऊपर पहुंच गया था। वहीं FMCG और धातु तथा ऊर्जा आधारित शेयरों में बढ़त के कारण निफ्टी ने भी अपना सर्वोच्च स्तर छू लिया था। जयंत, मैं थोड़ा सा एक अलग आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। पिछले कुछ समय में स्मॉल कैप फंड ने निवेशकों को भरपूर मुनाफा दिया, लेकिन अभी स्थिति यह है कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में जबरदस्त रैली भी देखी जा रही है अपार्ट फ्रॉम BSE और NSE। बिल्कुल, तो ये स्थिति क्यों हम देख रहे हैं ऐसा, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, ब्रॉड बेसिंग मार्केट्स हम सबको पता है लगातार काफ़ी लंबा दौर रहा इंडियन मार्केट्स का रैली का, अगर पिछले 12 महीने के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो जी। और ऐसे स्थिति में शुरुआत में तो ये थे कि ये जो रैली था ये सीमित हो रहा था लार्ज कैप स्टॉक्स में, अच्छे कंपनियों में, बट हमेशा जब स्टॉक मार्केट का दौर लंबे चलते हैं तो फाइनली पर्कुलेट करता है ये मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में, खास करके स्मॉल कैप का रैली अगर देखें तो। एक दूसरी बात ये है कि सिमिलरली जब गिरावट आते हैं शुरुआत में हमेशा स्मॉल कैप और मिड कैप का स्टॉक्स पे सबसे ज़्यादा झटका आता है, बिकॉज वहाँ पे मूवमेंट काफ़ी फास्ट होता है और हम सबको पता है कि वहाँ पे रिटेल क्षेत्र का जो निवेशक है काफ़ी जल्दी निर्णय लेते हैं स्मॉल कैप में, जहाँ पे भी थोड़ा बहुत फॉरवर्ड अगर लो मूवमेंट आता है तो ये अच्छी बात है, हम सबको वेलकम करना चाहिए कि ब्रॉड बेस्ड रैली मार्केट में हो रहा है और इस रैली का दौरान सबको फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, खास करके स्मॉल कैप स्टॉक्स में। There is nothing bad in small cap. There are a lot of good companies in small cap also. खास करके स्मॉल कैप स्टॉक्स में लोग अपना इमोशन के साथ इन्वेस्ट ना करें। They should look at it in terms of numbers. They should look at it in terms of returns which they expect. And most critical, पड़ोसी, ऑफिस का कोलीग, दोस्त, इन सब से सलाह लेके इन्वेस्ट ना करें। निवेश करें आप अपना खुद पढ़ के उस कंपनी के बारे में जानकारी लेके और उस कंपनी का स्ट्रक्चर जो भी थोड़ा बहुत आप शायद फाइनेंशियल एक्सपर्ट ना हो, फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ ना पाए, लेकिन एक सिंपल गूगल सर्च करिए
उसका साथ आप कंपनी के बारे में जो आपको डेटा मिलता है, साधारण आदमी भी उसको पढ़ के, साधारण निवेशक भी उसको पढ़ के एक निर्णय बेशक ले सकता है कि कहाँ तक इस मार्केट में रियलिस्टिक प्राइसिंग चल रहा है। हमेशा, हालांकि रियलिस्टिक प्राइसिंग में आपको मुनाफा शायद उतना हो नहीं, लेकिन यह है कि कोई फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर उस तरह का कंपनी में ना हो। अच्छा, बैक टू शेयर मार्केट अभी हम आते हैं, तो एफएमसीजी, एनर्जी, मेटल स्टॉक्स और जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट है, इस पे हम जबरदस्त तेजी देख रहे हैं। हालांकि ये ऐसा लग रहा है कि ये तेजी बढ़ती जाएगी, लेकिन 75,000 के लेवल को छूना, उसके बाद लोगों के मन में ये भी होगा कि ये नीचे जबरदस्त तेजी से कहीं गिर भी ना जाए। तो ऐसे में ये जो सेक्टर्स हैं, ये फ्रूटफुल रहेंगे लोगों के लिए। देखिए, ये सारे क्षेत्रों जो आपने बताया, मैं मानता हूँ मिडिल टर्म इन्वेस्टमेंट का अवधि अगर हो, यानी कि कम से कम 18 महीना का अगर आपका पास निर्णय हो, 24 महीना का निर्णय हो, तो आप बेशक इसमें बने रहे। ये ज़रूर है कि इस रैली के दौरान अगर आपका 3 महीना 6 महीना का अवधि रहेगा, हमें भी नहीं पता है किसमें आप लगाए पैसा, कहाँ पे बचा के पैसा, अगर मार्केट पे करेक्शन हो, ये सारी चीज़ें मार्केट के किसी को पता नहीं होता है। लोग टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, अपना चार्ट्स इंटरप्रेट करते रहते हैं, लेकिन आखिर में बॉटम लाइन इज़ वेरी क्लियर, मार्केट का मूवमेंट लोगों को कहीं भी कुछ पता नहीं होता। अगर पता होता तो मार्केट में लोग पैसा ना बना पाते ना गंवाते। सीधी सी बात है जी। When we're talking about the Indian markets, Jayant, of course, yesterday the 75,000 mark, crossed it and record highs. But earlier we were talking about the fact that, the US Fed, the inflation figures that have come out is likely to, and the FOMC, their observations is likely to have an impact on the Indian markets. Apart from that, do you think also the fact that the Brent crude oil is right now, around $90 a barrel, that is also going to affect the Indian markets? I think the summers, we are in an election summer. And obviously, I strongly believe that even if there is some spike in global prices, I don't think we are going to see an immediate domestic impact, at least till the elections are over, number one. Number two, what's also important to understand is globally, if there is any spike or erratic movement in oil prices, globally that's going to have an effect. So there is no doubt on that. But then, as I also said, if Iran attacks Israel, the chances of which is now people say it's quite, almost there. Yeah. So in that case, obviously we can see some abrupt movement, but people plan for it. It's not like, you wake up this morning and you say Scud missiles or whatever missiles they attack, which that's all seen in there. Nothing like that. People plan for it. When I say people, it's nations. The nations plan for it. But you can't, keep on thinking that, it will go to such a runaway rate that it will be impossible to manage. No, I don't think that sort of a situation is going to occur. If it was winter, the situation would have been different, because the oil demand in winter is much more because of, the weathers and things like that in the Western Hemisphere. I think at this point of time, even if it's, nothing is under control, it all how the market plays out, but I don't think people can take in $8 to $10 or even $15 per run. But then there is also psychological factor of $100 benchmark. Yes. If the oil prices cross, then maybe there will be a shooting spiraling upwards and things like that. But because then the oil cartel is also very unpredictable. What happens? They start producing more oil. Because we've seen in the recent months, it's from $75, $74 has now come to $90. Exactly. So the other thing I want to ask you is, if we look at the markets from from a long-term perspective, do you think the timing and the extent of rate cuts is also likely to shape the way the Indian markets move in the rest, moving ahead in this year? No, see, I strongly believe why Indian markets rate cuts would shape globally all markets. What's important to understand is, if oil prices remain stingily high, and if they refuse to come down, then obviously inflation would not be wished off that easily. And if inflation is not wished off that easily, no central banker or monetary policy expert would like to tinker with the rate of interest. Let's put it in that manner. Right. Moving on, the Centre has directed all states and union territories to enforce weekly stock disclosures of pulses by all stockholding entities and verify the stocks declared by them. The Consumer Affairs Ministry said stocks in warehouses located in major ports and in pulses industry hubs should be verified from time to time. It has also asked them to take strict action on stockholding entities found to be reporting false information on the stock disclosure portal. The Secretary, Department of Consumer Affairs, Nidhi Khare, held a meeting with Principal Secretaries and Secretaries of State Consumer Affairs, Food and Civil Supplies Departments in New Delhi yesterday.
During the meeting, the states and UTs were apprised of the need for increased vigilance over the stock position and price trends for pulses to prevent hoarding and market manipulation. Apart from the 5 major pulses, namely tur, urad, chana, masoor and moong, the states and union territories have been asked to monitor the stock position for imported yellow peas. Pulses, we import a major, a major portion of our pulses that we consume here is an imported commodity. So how important is this fact, this particular step that the Centre has now taken for weekly stock disclosures? See, it's important to understand that there is a pre-monsoon session, which obviously we need to monitor the stocks and how the stocks are behaving. And as I said, a critical component to control inflation is how we control the movement of stocks, monitor them. And we are entering into a season typically post-summer when we see, a lot of abrupt requirements of stocks to be taken across the nation in terms of where, floods and all are there. This is also a time when droughts come in. Yes. If the rainfall is erratic or the rainfall is not as per. So the next 3 to 4 months is very important for movement of stocks in terms of inventory, in terms of where it should be areas and things like that. So we have a lot of scientific measures to understand how the weather will shape up, and I think this is important, should I say, a collateral effort in terms of also keeping track of how stocks are built up in terms of inventory, how much they are, where they're kept, so we can preempt at least 3 to 4 weeks ahead in terms of how the stock should be panning up at which part of the country in that sense. जयंत, IMD ने प्रिडिक्ट किया है कि मॉनसून बढ़िया रहेगा और हमारे लिए लाभप्रद रहेगा. स्थितियां भी वैसी नजर आ रही हैं और आपने भी थोड़ा सा जिक्र किया उन बातों का. अभी मॉनसून को और मार्केट को अगर हम जोड़ करके देखें तो आने वाले समय में आफ्टर द इलेक्शन जो स्थितियां बनेंगी, खासतौर पर उस वक्त मॉनसून का सीजन होगा, कैसे स्थिति आप मार्केट की देख रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि these are very early estimates of monsoon, but nevertheless important. I don't want to dismiss them, but what's important to understand is ये जो estimates आया है monsoon का, आंकड़े अच्छे बता रहे हैं जी. और मैं मानता हूँ कि अगर 80 से 90% देश में मानसून का कवरेज अगर ठीक ठाक रहे, ये देखते हुए कि मतलब इस वक्त स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी है और साथ में नया सरकार शपथ लेंगे जून में, तो ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं मानता हूँ तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट का रूप से आई डोंट सी एनी मेजर टर्बुलेंट फैक्टर्स. बट साथ में एक कैविएट में ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, विदेशी जो स्थितियाँ है उसके ऊपर हमारा किसी का नियंत्रण नहीं है और इसमें अब जैसे मैंने कहा कच्चे तेल का कीमत एक आंकड़े होंगे जो मतलब इसको कहीं ना कहीं चैलेंज कर सकता है. सिमिलरली वेस्टर्न एशिया में जो चीज़ें घट रहा है वो अगर वाकई प्लान अप कर जाए ग्लोबली, क्योंकि आज मैं ये भी पढ़ रहा था कि ग्रीस has started actually thinking to give a huge air power support in the Ukraine war. तो ये सारी चीज़ें भी अगर अलग से किसी को पता नहीं कहाँ पे क्या उछाल हो सकता है, तो उस तरह का स्थिति अगर बने रहे तो शायद एक अलग से चुनौती दे सकता है. लेकिन घरेलू का जो बाजार का जो हाल है, घरेलू जो अलग से मैक्रो पैरामीटर्स है, साथ में मॉनसून का आपने फैक्टर बोला, इसका साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकली एक नया सरकार का गठन होने वाला है, ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं मानता हूँ इट विल बी क्वाइट स्टेबल एंड गुड. Moving on to commodities, oil prices were steady near 6-month highs today after rising by $1 a barrel in the prior session as investors braced for a potential attack on Israeli interests by Iran, OPEC's third largest oil producer. The Brent crude oil futures was marginally lower at $90.46, whereas Western Texas Intermediate was lower at $86.14 when reports last came in. Jayantu, we have been discussing the oil prices right now. The fact that it is at $90 and apart from the various geopolitical, the factors that may affect oil prices in the coming day, there's also the fact that OPEC earlier last month in March, it agreed to extend voluntary oil output cuts by 2.2 million barrels per day into the second quarter, which is till June. Yeah. Do you think that's also going to have a bearing? No, it all depends on where the oil prices are. And as I said, OPEC as well as the non-OPEC cartels. If you look at last 10 years, apart from the announcements, they don't have a huge history of being consistent to what they promise and what they do. So, it's not that I'm taking it with a pinch of salt. It all depends on what the factors and figures are and how they work on. जयंत जी, स्टूडियो में आने के लिए, कार्यक्रम में शामिल होने और हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. शुक्रिया. And before we close, a reminder of the headlines. Gold prices declined from all-time highs over strong US inflation figures. US stocks end sharply lower after March inflation data.
and oil prices hovering near 6-month highs amid West Asia tensions. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. Do remember to tune into your radio sets at 6:30 and listen to your favorite business economic program, Market Mantra. Till then, goodbye. Namaskar. नमस्कार. Market Mantra.